अमरीकी सरजमीन पर पाकिस्तानी ख़वातीन की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पासवो की जानिब से 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से कश्मीर की अजीम बेटियों को खिराज तहसीन पेश करने और दरिंदा सिफत भारतीय काबिज अफवाज के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरे और तकरीब का अहतमाम इंतहाई तुज़्को एहतशाम से किया गया। न्यूयॉर्क की वाहिद और सबसे बड़ी तकरीब में जहां न्यूयॉर्क सिटी इंतज़ामिया, सरकारी और गैर सरकारी अफसरान ने शिरकत की, वहां ट्राई स्टेट में बसने वाली कम्यूनिटी ने इस खूबसूरत महफिल में भरपूर तरीके से शिरकत की और अपने कश्मीरी बहन भाइयों से मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 792,000 minutes without human rights. 13,200 hours under constant fear for life. 550 days of chanting Azadi, desperate for freedom. And 73 years since a promise was made, the right to self-determination. While the world experienced a dim reflection of lockdown in 2020, only Kashmiris know the true horrors of a ceaseless lockdown. This is the state of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and these are the lives of 12 million people, not living, but merely surviving. दस्तूर रियासत क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much everybody who's joining here with this great cause. We are showing the solidarity with Kashmir because this is the biggest day. This is the solidarity of Kashmir Day, like we are celebrating always in Pakistan. So we arranged this event here also because we want to show our solidarity with Kashmiri women, because the Kashmiri women is the most important role in a Kashmiri freedom movement. They are playing a good and biggest role. They are sacrificing with their health, wealth and everything with their dignity. So we want to salute them and we want to acknowledge them. That's why we are here together. So thank you so much everyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I hope मास्क के बावजूद आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। Very very happy to be with the Pakistani American community. Every year, I'll just make a few remarks in English for the gentleman behind me so he can also understand. On 5th February, every year, the government and people of Pakistan and Kashmiris all over the world observe Kashmir Solidarity Day. On this day, the government of Pakistan and the people of Pakistan, as well as our diaspora communities all over the world, the Kashmiris, both in Azad Jammu and Kashmir as well as in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, reaffirm their support to the cause of Kashmir. The cause of Kashmir is the right, the granting of the right of self-determination to the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir as per the UN Security Council resolutions. So this is the significance of this day. I'm very happy to see you and the rest of the Pakistani American community of Coney Island. We're all gathered here today on a slightly chilly evening. It was worse earlier, but it's getting better. So thank you so much. And for the community, एक तो मैं आगाज़ करना चाहती हूँ। अतिया, आपने जो इनिशिएटिव लिया है, the main reason I'm here is because Atiya is leading a very important movement here on Coney Island, Brooklyn. She is a woman leader. She has set up a women's organization, and it is extremely, extremely heartening for me as a woman leader myself to see the women of Coney Island, Brooklyn come out for the Kashmir cause in such a big way. I think this is unprecedented. This has not been done before. And the importance of this event by a women's organization or a women's organization is also the fact that it highlights the plight of Kashmiri women in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. आप जानते हैं कि IIOJK में
کشمیری خواتین اور بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے, جو ان کے اوپر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اٹ از انپریسیڈنٹڈ. اور جب خواتین ایک بڑی تعداد میں نکل کر اس چیز کا اظہار کرتی ہیں, اس کے اوپر دے تھرو لائٹ آن دس, تو اس سے یہ ایشو اور اجاگر ہوتا ہے. تو اس موقع پر ہماری جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ ایک لارج نمبر میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے پروٹیسٹ کیا. ان کی تعداد کوئی 30,000 سے 50,000 کے درمیان تھی, اور یہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ تھا, جس سے یہ بالکل ظاہر ہے اور یہ بالکل واضح ہے کہ ہماری کمیونٹی کشمیر کاز کے لیے دن رات انتھک محنت کر رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ سب کا, میڈیا کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اب جیسے کہ عطیہ نے بھی فرمایا اور باقی لوگوں نے بھی, آئی ایم شیور کہ ذکر کیا ہوگا, وی ہیو ناؤ اے نیو ایڈمنسٹریشن ان دس کنٹری, وی ناؤ ہیو اے نیو پریزیڈنٹ, and the Biden-Harris administration that we have a lot of expectations. The Kashmiris of the world, wherever they live, have a lot of expectations from this administration, because we believe that they have a strong faith and belief in human rights, and the human rights violations, the egregious violations of human rights that are taking place in occupied Jammu and Kashmir will be taken up very, very seriously. So we look up to all the elected officials, we look up to the Congress, US Congress, we look up to the local politicians, local officials and office holders to come forward, to step up and step forward for the humanitarian and the human rights of the people in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The diaspora, I'm very confident, will continue to play its very, very important role. You need to be better organized, you need to be more strategic, and you need to continue to engage your elected officials, because that's where it matters more and where you can make a difference. With this, I want to once again reiterate that the government and people of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan, all of us are fully committed to the cause of Kashmir, and we will continue to support them. We will continue to stand by the Kashmiris, and we will continue to urge the world community to become more engaged and to help Kashmiris get their right to self-determination as enshrined in the Security Council resolutions. I thank you all for your attention, and long live Pakistan. Pakistan Zindabad. سب سے پہلے میں اس بات پہ بات کروں گا کہ ہم امریکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کشمیری اور اس کے ساتھ ہم پنجاب, بلوچستان اور دیگر جو صوبے ہیں سب کے لوگ ہم اکٹھے ہیں. لیکن جب اکٹھے ہونے کا فائدہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, اس وقت ہم اکٹھے نہیں ہوتے. اس پر میں پھر زور مذمت کرتا ہوں. آج کے دن خواہ کوئی تنظیم, کسی سے منسلک کوئی شخص کہیں سے بھی آ جاتا, یا وہ لوگ جو کسی تنظیم سے منسلک نہیں ہے یا وہ تنظیمی کام نہیں کر رہے, تو صرف اور صرف کاز آف کشمیر کے لیے ان کو آج اکٹھے ہونا ضروری تھا. اور اس پر میرے خیال میں جو میسج کنوے ہونا تھا گورنمنٹ آف امریکہ اور ادر یورپین کنٹریز کو, وہ بہت ہی بگ میسج ہونا تھا. تو میرے بھائی ملک ندیم عابد صاحب نے جتنے خوبصورت انداز کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے, اور یہ نقاب کشائی ایک قسم کی میں کہوں گا کہ نقاب کشائی کی ہے کہ جو آج تک ہوا کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کے اندر جو آج تک ہو رہا ہے, یا جو ہماری وہاں پر رہنے والی بیٹیوں, بہنوں, ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے بڑی ہمارے لیے شرم والی بات کوئی نہیں. یہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ میں بات کہوں گا, پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کہوں گا کہ یہ کشمیر اگر شاہ رگ ہے پاکستان کی, تو پھر پاکستانیوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی ساتھ مل کر اس جدوجہد کے اندر شامل ہونا چاہیے, جس سے پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بن جائے. کشمیر میں جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی ہیں پچھلے 31 سال سے 32 سال سے, ان کا ہم ہر جگہ ذکر تو کرتے ہیں, لیکن کشمیر تحریک کا جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے,
जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम एज ए कौम और पाकिस्तानी मीडिया उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता रहा, वो है ख़वातीन के साथ होने वाले मज़ालिम। आप में से कितनी ख़वातीन हैं, खुदा को हाजिर नाज़िर जान कर बताइए, कितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने कोई इंडियन कपड़ा, कोई इंडियन ज्वेलरी या कोई इंडियन चीज़ पहनी हुई है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर नहीं पहनी तो इसको एक मिशन बनाइए कि आज के बाद आप इंडियन कपड़ा, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन मूवीज, इंडियन गाने नहीं देखेंगे। मैंने 30 साल पहले ये अहद किया था और मेरे दोस्तों, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, आई डिड नॉट मिस वन सिंगल थिंग इन माई लाइफ, कि हमारी आज़ादी की तहरीक खून के आखिरी कतरे तक जारी रहेगी, चाहे वो खून का आखिरी कतरा वो मेरा हो या मोदी का हो। इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। तक पाकिस्तानी यूनाइटेड नहीं होंगे, कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें अपनी जो है वो कमियां जो हमारे अंदर है, हमें अपने आप को भी सही करने की ज़रूरत है कि हम खुद कितने यहाँ पर जो है वो यूनाइटेड होकर खड़े हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों को, जहाँ जब मेरी आवाज़ ही बाकी लोगों तक जाएगी तो ज़रूर इस बात पर सोचेंगे कि इतनी सर्दी और कोरोना में यहाँ पर खड़े होकर हमें रेटिंग नहीं करनी थी, बल्कि एक मैसेज जो है वो वाइट हाउस तक पहुँचाना था कि किस तरह से बाइडन अगर जो है वो जो है इस्लामी मुल्कों पर अगर उसको जो है ख़त्म किया है बैन को, तो कश्मीर के इशू पर भी बात करें। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजम है। तो आज जो हम सारे इकट्ठे हुए हैं, आज के दिन हम जो सच बोलने का दिन है, आज जो 5 फरवरी सच बोलने का दिन है और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन है। और आज मैं ब्रुकलिन इमर्ज, पासो, ये 2 तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने सामने आके कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये प्रोग्राम इनेकाद कराया। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बहन अतिया का स्पेशली बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये चीज़ अरेंज करवाई। आज के दिन इस कोनी आइलैंड के ऊपर 15 से 20 तंजीमें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, आपको वो तंजीमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। आज के दिन हमें चाहिए कि हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे होके हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करें। आपने ये देखा कि इमरान खान साहब कोटली के अंदर उन्होंने लाखों की तादाद से मजमे के साथ खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि मैं कश्मीरियों का एम्बेसडर हूँ। मैं पूरी 1.5 करोड़ कश्मीरी अवाम की तरफ से इमरान खान साहब का और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 73 साल से उन्होंने कश्मीरियों के लिए 3 जंगें लड़ी और हर बात पे वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन जब हमारी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो हमारी कमी पेशियां हैं उसको पूरा किया जाए और इस काज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए। As you know, I'm Matthew Eugene, a New York City Council member representing District 40. This month is a very important month for the United States of America and for all of us from the Black community also. We are celebrating Black History Month. And one of the visionaries, philosophers, one of the great thinker, Dr. Martin Luther King, who was fighting for justice and respect for everybody. He said that injustice anywhere is injustice everywhere. So that means we human beings, we have to come together, to work together and to fight to make sure that everyone, every human being and every group should be respected. Should be respected. And our society or humanity will be a better place when all of us understand that it is our moral obligation to stand for those who are oppressed. We have to stand together. Because if we want to have peace, progress, we have to make sure that we give to the people who are oppressed the opportunity to be free, to be respected,
and to take the decision for themselves. In the city council, we in the city council, we have been fighting for everybody, because all of us who make New York City strong, vibrant, and powerful. We voted about the halal food, for the city to provide halal food to the Muslim people. We voted also for the religious celebration for the Pakistani and Muslim people. I was one of the sponsors of this legislation. And right now, I introduced a piece of legislation in the City Council to name Coney Island Avenue Little Pakistan. Of New Creation Ministries Incorporated, affiliated to the Seventh-day Adventist Churches of Brooklyn. We have over 60 churches here in Brooklyn, and as an affiliate of this organization, we have been involved here in the Pakistani community for over 30 years, and all of the organizations we have been partnering with, especially COPO with the food distribution. We get so much food to the churches. So you don't only serve the Pakistani community, you serve entire Brooklyn. And all race, all cultures, all religions, we get food from right here to serve our people. And we thank you very much, this Pakistani community, for that. I have decided, from the encouragement of many of the leaders here, as the founder and president of the 70th Precinct Interfaith Clergy Council, working for public safety and peace and police community relations. Of any of the communities in Brooklyn that I know, with all the precincts, there is no other community that work hand in hand with the precinct, with the police, than the Pakistani community. You have more lieutenants, more officers in the police force than any other group in Brooklyn, and I applaud that. Now, I have been asked by many of the community members to run for city council, and I am going to be running for city council in this time. And what I would like to know, I must let you know, for me, it's not a lot about talk. There's a lot of talking. Everybody talk about the problems in Kashmir and all over. I'm tired of the talk. I want to know what we can do to bring effect. What sort of a support the city council can give to you? Maybe our good city council member here fighting Black History Month and unity, solidarity. What can we do? I would like to work with you to know what can be effective in city council that would affect the state, that would affect this federal government, to know what they can do. Always, the salute and acknowledge our media person are here, Manzoor bhai, Samad, Mohsin Zahir bhai, Fahim, and everyone who is supporting this cause, and all organization leaders, especially Brooklyn Emerge, Nisar bhai, Zakriya bhai, Imtiaz bhai, who arranged this event, his support. So thank you so much everyone. In the last, I again salute to all Kashmiri women and want to make sure we are standing with you in this fighting till then our death, inshallah, and we will take the Kashmir back, inshallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अमेरिका में जो ब्रुकलिन लिटिल पाकिस्तान है वहाँ पे पैस फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी स्किल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसने एक पाकिस्तानी अमेरिकन स्किल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही मेगा इवेंट किया पाकिस्तान 5 फरवरी के हवाले से कश्मीर डे के हवाले से जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमारी पासपोर्ट की CEO है हमारे साथ मोहतरमा अतिया शनाज से बात करते हैं कि वाई शी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट ऑफ 5th of February. वेलकम टू ग्लोबल एंड दुनिया इंटरनेशनल. आज आप तो वैसे रफ़ायामा के काम कर रही हैं पिछले 1 year से, लोगों की मदद कर रही हैं पेंडेमिक के दौरान. 5 फरवरी का आपने ये कैसे सोचा कश्मीर डे के हवाले से, क्या आपके जहन में था वो बताइएगा. और माशाल्लाह इवेंट हुआ है जो, और बहुत उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग मकतबा फ़िक्र के आ गए, तो ये क्या कॉज है इसके हवाले से. Thank you so much, Manzoor bhai and Dunya International and Samad for supporting this great cause. मैंने क्यों सोचा कश्मीरी ख़ातून को, कश्मीरी ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए. जैसा कि आपने कहा कि पिछले 1 साल से हम पासो की तरफ से फूड पेंट्री कर रहे हैं, तो ये एक औरत के लिए कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता. बिकॉज द जनरल परसेप्शन इज़ द वुमन इज़ अ जेंडर वीक जेंडर, बट इट्स नॉट ट्रू. वुमन इज़ स्ट्रॉन्ग जेंडर.
और हाउ कैन वी मैनेज दिस थिंग्स एज अ वूमेन. तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से मैनेज करते हैं. एक औरत जो एक माँ भी है, एक बेटी भी, एक बहन भी है, ना सिर्फ अपना घर लेके चलती है बल्कि घर से बाहर निकल के जब वो काम करे तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है. तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता. जबकि कश्मीरी ख़वातीन ना सिर्फ अपना घर चला रही हैं बल्कि 70 साल से 73 साल से आज़ादी की इस जंग को भी लड़ रही हैं. ना सिर्फ उन्होंने अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, बल्कि अपने ख़ानदान को भी कुर्बान किया. वो इस जंग में अपने शौहरों को, अपने बच्चों को तैयार करती हैं इस फ्रीडम के लिए. तो हम उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एक औरत का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है आज़ादी की जंग में, इसको महसूस करने के लिए आज हमने सॉलिडारिटी डे मनाया फॉर द कश्मीरी वूमेन. और माशाल्लाह से मुझे खुशी है कि तमाम पाकिस्तान की जो है कमोबेश ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ पर आए, क्योंकि कश्मीर हम सबका है और कश्मीर को हम इंशाल्लाह आज़ाद करा कर रहेंगे. और जहाँ तक बाकी स्पीकर्स ने बात की कि अब सिर्फ नारों की बात नहीं होनी चाहिए, इवेंट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि अब इससे आगे की बात होनी चाहिए. हमें सीरियसली इस इशू पर बैठ के बात करनी है, अपने इस जो है व्यूज़ को आगे तक पहुंचाना है, यूएनओ तक पहुंचाना है, और इसको जो है इस फ्रीडम को जो है इंशाल्लाह ताला हम जो है पाए तक मील तक पहुंचाएंगे और कश्मीर को आज़ाद करा कर रहेंगे. थैंक यू सो मच. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज अल्हम्दुलिल्लाह इज़हार जहती के मतलब हमारी पास हो के जो प्लेटफॉर्म है उस बहुत बिग प्रोग्राम हुआ है, जिसको माशाल्लाह जिसकी क़यादत जो है ना वो अतिया शहनाज जो कि इसकी CEO उन्होंने की. और माशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा इज़हार यकजहती का प्रोग्राम था, इससे पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक पैगाम जाएगा. और इसके साथ मैं ये कश्मीरी भाइयों को, बहनों को, बेटियों को यकीन दहानी कराता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे. और इसके साथ ही मैं जो हमारी दुनिया इंटरनेशनल जो है ये न्यूज़, इसकी चूँकि सिल्वर जुबली हो चुकी है तकरीबन या हो रही है, मैं इनको अपनी टीम की तरफ से, इलामा इकबाल कम्युनिटी की जानब से, बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान की जानब से, पासो की जानब से, ZIH इंटरनेशनल की जानब से जो है ना वो इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए.